हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर हम कौन करथिले? लास्ट लेक्चर हम मैट्रिसेस रो थ्योरी कर दी नहीं कि मैट्रिसेस थ्योरी माने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तापर हम देखले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तापर हम देखले ऑपरेशंस विथ मैट्रिसेस। जदि दुटा मैट्रिक्स गिवन अछि त हम कौन कर परबा? दुटा मैट्रिक्स को ऐड कर परबा, दुटा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर परबा, गोटे कांस्टेंट गोटे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर परबा एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए सब हम शिखि। आज हम कौन करबा? आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करबा 4a रो। आ जदि या पूर्व हम ये दुटा वीडियो आपने देखना आंती लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो रिक्वेस्ट करबो देखि आसी, काइना देखि आसला पर एटा भलार बुझि पाबो। हालांकि इजी चैप्टर ना कंसीडरेबली बाकी चैप्टर गुडा जो अछि मैथ्स रे से एटा ठीक इजी चैप्टर, किंतु एथरे जो दुटा पार्ट अछि, लास्ट रो दुटा पार्ट, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन था, एटा ठीक है डिफिकल्ट पार्ट था। रिमेनिंग पार्ट था इजी, किंतु सब बहुत किछ जिंस अछि जोटा मन रखो, डेफिनेशन सब अपन मन रखो, ठीक अछि। आ यार ये लेक्चर पर आरो जेई लेक्चर आछो, जेई लेक्चर माने 2019 2020 and 2021 and if possible 2022, तो 4 वर्ष में मैट्रिसेस रो सब क्वेश्चन को हां सब शिफ्ट सब क्वेश्चन को हम डिस्कशन करियो, ठीक अछि। आ जो चैनल रो नुआ अछंती मु जेंति सब बेले कहू चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो so that the video will reach to the maximum audience and everybody will get benefit from this। अब बेल आइकन को प्रेस कर दे so that नुआ वीडियो आसी तार नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो स्टार्ट करियो। और नियर फ्यूचर रे हमर ऐप ता आसो एजुकेशनल ऐप ता मु तार डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दियो, सेठी से ऐप ता को डाउनलोड कर करे, सेठी तुमको जेई लेक्चर मिलियो, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलियो प्रैक्टिस पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे मिलियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हे कि मिलियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गुडा जो 2019 रो 2020 रो 2021 एंड 2022 ये सब हम सीएचएससी रो बोर्ड पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर छु, एगुडा हम देख करियो। और ईच चैप्टर रो फ्रॉम ईच चैप्टर हम चार चार वीडियो बने जोडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऊपर बेस अछि, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस अछि ना ता ऊपर बेस अछि, सेगुडा मध्ये अपन देख करियो। आ तापे ऐप को डाउनलोड कर जाऊ, और ऐप तार जो लिंक अछि, ऐप रो लिंक का हम डिस्क्रिप्शन रे दे दियो नेक्स्ट लेक्चर हम ठीक अछि। चलो स्टार्ट करिया। देखो क्वेश्चन कौन कहछि, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं अपनो लास्ट लेक्चर करछि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स माने कोन? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स माने नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, एटा होतो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स केतकी रो अछि दैट इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एठी देखो एठी ओनली वन रो अछि, गोटे रो अछि, तो 1 इनटू नंबर ऑफ कॉलम। देखो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो 1 इनटू 3 एमती ही लिखा जाए। मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 या 1 by 3 एमती पढ़न 1 क्रॉस 3 या 1 by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 अछि, दिस इज रो 1, this is row 2 and this is column 1, तो केतरा रो हैला? 2 रो मल्टीप्लाई बाय केते कॉलम? गोटे कॉलम, तो 2 क्रॉस 1। एठी देखो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, एगुडा खाली रो, दिस इज कॉलम 1 and this is column 2, so how many rows are there? 3 rows are there and 2 columns are there, so the order of the matrix is 3 cross 2। now it is ये हैला रो 1, रो 2 रो 3, column 1, column 2, column 3 और column 4, तो रो 3 माने order of the matrix will be 3 cross 4, 20 रो अछि, so this will be 3 cross 4, so this is how you can find the order of the matrix। तो मान लो order of the matrix is nothing but number of rows multiplied by the number of columns। then how many entries are there in a 3 cross 3 matrix? देखो जदि गोटे मैट्रिक्स अछि, जदि गोटे मैट्रिक्स अछि तार ऑर्डर होची 2 क्रॉस 3 माने केतना रो रहला? 2 रोज एंड 3 कॉलम, माने मु जो एमती लिखली A
B C तीनटा कॉलम है एंड D E F एमती रही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो एथरे केतरा एलिमेंट अछि 3 एथरे केतरा एलिमेंट 3 टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी प्लस 3 विल बी 6 और 2 rows and 3 column data row अछि और तीनटा column तो 2 into 3 will be equal to 6 एमती रही तो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम जब मल्टीप्लाई कर दवा तो नंबर ऑफ एंट्रीज आसी नाउ एंट्री माने एलिमेंट सो ईच एलिमेंट इज कॉल्ड द एंट्री गोटे गोटे एलिमेंट को हम कोन कहू मैट्रिक्स एंट्री एठी 6टा एंट्री अछि तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स माने 3टी रो अछि 3टी कॉलम अछि तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 3 rows and 4 columns so 3 into 4 will be equal to 12 entries P into Q so PQ a square matrix of order P जब गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स अछि आ तार ऑर्डर P अछि स्क्वायर मैट्रिक्स माने नंबर ऑफ रोज इज P number of column is also P so number of elements will be equal to P square entries P square entry बुझियला जेति रो एलिमेंट जेति कॉलम एलिमेंट जोटा तक मल्टीप्लाई कर दे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आसी give an example of 3 cross 1 matrix माने गोटे मैट्रिक्स एमती को हो जोथरे तीनटा रो थियो और गोटे कॉलम तीनटा रो थियो ना A B C एगला तीनटा रो आ गोटे कॉलम ना देख this is row 1 this is row 2 this is row 3 and this is your column 1 so 3 rows and 1 column so the order of the matrix will be equal to 3 cross 1 then 2 cross 2 matrix A B C D 2 cross 2 matrix माने matrix with 2 rows as well as 2 columns दुटा रो रहो दुटा कॉलम रहो माने दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स इसे एटा को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह पारे एंड एथर गोटिए कॉलम अछि तो दिस इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करती तो द नंबर ऑफ कॉलम ए कहला if the number of columns equal to 1 it's called a column matrix 4 into 2 matrix माने how many rows will be there 4 rows will be there and 2 columns will be there so look this is 1 2 3 4 minus 1 5 7 and 6 how many rows are there look 4 rows na this is row 1 this is row 2 this is row 3 and here is row 4 this is C1 and this is C2 column 1 and column next 1 cross 3 matrix माने 1 row and 3 columns let it be 1 minus 1 and 5 only 1 row look this is only 1 row and 3 columns C1 C2 C3 so this is a 1 cross 3 matrix since the matrix is having only 1 row it's also called a row matrix या को हमें row matrix भी कहते हैं काहे only 1 row है matrix is having only 1 row and it's called a row matrix also दिमाग बहुत ही what is the order of A देखो ये है row 1 this is row 2 this is row 3 now check how many columns are there C1 C2 C3 C4 C5 how many rows are there 3 how many columns are there 5 so the order of the matrix is 3 cross 5 order of the matrix equal to 3 cross 5 write down the entries A31 A31 माने कौन what is A31 A31 माने that element which is there in third row देखो first element out row और second entry out column का third row and first column देखो third row first column it है ना third row and first column so A31 will be equal to 3 next is your A25 second row fifth column so it is second row of fifth column which is 2 and second row third column A23 second row third column 6 second row of third column बुझे ना write down A transpose राम कौन करते बोले ट्रांसपोज राम रो रो एलिमेंट को कॉलम रे लिखछ तो देखो फर्स्ट रो रे कोन अछि फर्स्ट रो ला 1 2 3 4 1 तो A transpose is equal to 1 2 3 4 1 so first row ila first column second row 4 5 6 1 2 that will become second column 4 5 6 1 2
Next, third row is 3, 9, 1, 1, 6. So that will become third column 3, 9, 1, 1 and 6. Okay, this is the transpose. This is the transpose. Now, what is the order of A transpose? Now this is having first row, second row, third row, fourth row and fifth row. 5 rows and how many columns? 1, 2, 3. 5 rows and 3 columns. So order of A transpose. Order of A transpose is 5 rows are there and 3 columns are there. ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ କରିବେ ନମ୍ବର ଅଫ रो ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ କଣ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 कौन देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन बिलो फाइंड ए प्लस बी तुम फाइंड करबा ए प्लस बी इज इक्वल टू मु कहतिले अपन जदी दुईटा मैट्रिक्स ऐड करियार अछि यार ऑर्डर सेम थिबा को एट देखो 2 रो एंड 1 कॉलम हियर आल्सो 2 रो एंड 1 कॉलम माने ऑर्डर इक्वल अछि सो वी कैन ऐड सबट्रैक्ट सब कुछ कर करे while adding ना ये यहाँ से तो ऐड हो 7 minus 6 will be equal to 1 and 1 plus 9 will be equal to 10. So this is what A plus B is. Now B plus A. Same as here. 7 minus 6 is 1. 1 plus 9 will be 10. 1 plus 9 will be 10. Now A minus B. A minus B equal to 7 minus of minus 6 and 1 minus 9. 7 plus 6 will be equal to 13 and 1 minus 9 will be equal to minus 8. This is A minus B. Then B minus A. B minus A minus 6 minus 7. Then 9 minus 1. So minus 6 minus 7 will be equal to minus 13. 9 minus 1 will be equal to 8. And verify that A plus B equal to B plus A. And therefore A plus B plus A ठीक है Therefore, A plus B is also equal to B plus A. The first and the B minus A equal to minus of A minus B. A to the minus 2 common नहीं जो तो ये plus हो गया अब ये minus हो गया which is your A minus B. तो हमें इंटेलेक्ट करें minus of A minus B minus of A minus B. Hence the 2. अगला सब now A to the here is A plus B equal to ये दूटा को ऐड करिए 1 plus 4 will be 5 2 plus 1 will be 3 plus 3 minus 3 is 0 minus 1 plus 2 will be 1 चेक कर दिए ठीक लगा थी 1 plus 4 5 2 plus 1 3 3 minus 3 0 minus 1 plus 2 will be 1 मुझे होता ना B plus A এটা बहुत इजी है ये तो खाली ध्यान रखिए 4 plus 1 will be 5 1 plus 2 will be 3 3 minus 3 will be 0 minus 1 plus 2 will be 1 therefore condition कौन होगा A plus B is same as B plus A. Now let us find the value of A minus B. Minus करेगा 1 minus 4 will be minus 3 2 minus 1 will be 1 3 minus of minus 3 so 3 plus 3 will be equal to 6 and minus 1 minus 2 will be equal to minus 3. Now let us find the value of B minus A also. B रो को माइनस करिए 4 minus 1 will be equal to 3 1 minus 2 is minus 1 minus 3 minus 3 will be equal to minus 6 and 2 minus of minus 1 will be plus 1 2 plus 1 will be equal to 3. Now B minus 1 we got a minus sign common name therefore B minus A equal to तसला देखो 3 minus 1 minus 6 and 3 एमती आसला जदि एथि गोटे माइनस साइन बाहर नहीं भीतर सब एलिमेंट साइन चेंज हो कहीं ना माइनस बाहर नहीं so this will become minus 3 this has to be 1 एटा हे गला 6 and this has to be minus 3 now this is the value of A minus B so हे गला proof therefore B minus A is also equal to B minus A equal to minus of A minus then easy है वैल्यू चलो A given B given अब देखो A plus B equal to 1 by 2 plus 1 by 3 कौन लिखो देखो 1 by 2 plus 1 by 3 and here is 1 by 4 plus 1 by 2 this is 1 by 3 plus 1 by 2 and 1 by 5 plus 4 by 5 same अच्छी क्वेश्चन
1 by 2 plus 1 by 3 will be equal to 5 by 6. LCM नहीं करोगे. 1 by 2 plus 1 by 4. So 3 by 4. 1 by 2, 1 by 3 should be 5 by 6. 1 by 5 plus 4 by 5. 5 by 5 and that is equal to 1. B plus A will be the same. B plus A is 5 by 6. 3 by 4. Again 5 by 6 and 1. This is B plus. Now A minus B. A minus B equal to 1 by 2 minus 1 by 3. Then 1 by 4 minus 1 by 2. Then 1 by 3 minus 1 by 2. And 1 by 5 minus 4 by 5. Simplify कर दो. 3 minus 2 1 by 6. 1 by 6. 2 minus 4. 1 by 4 minus 1 by 2 is minus 1 by 4. Calculate कर दो. 1 by 2 minus 3. So this will be minus 1 by 6. And the 1 minus 4 which is equal to minus 3 by 5. So this is A minus. Now B minus A. B minus A equal to 1 by 3 minus 1 by 2. 1 by 3 minus 1 by 2. And 1 by 2 minus 1 by 4. 1 by 2 minus 1 by 4. Again 1 by 2 minus 1 by 3. And 4 by 5 minus 1 by 5. So therefore this is equal to 2 minus 3 is minus 1 by 6. Half minus 1 by 4 will be 1 by 4. 3 minus 2 will be plus 1 by 6. This will be 3 by 5. This is B minus. Minus sign is common negative. So this has to be 1 by 6 minus 1 by 4 minus 1 by 6 and minus 3 by 5. And that is the value of A minus. Minus of A minus. देखला सब proof. But A minus B task वाला. सम तो फिफ्थ में जो करो. फिफ्थ रे कौन आसो देखो. आगे आसो A plus B. आगे कौन आसो A plus B. सब ऐड करो. 1 minus 1 वाला 0. Minus 2 plus 2 0. 5 minus 5 वाला 0. Minus 1 plus 1 0. 4 minus 3 will be 1. 3 minus 3 is 0. 1 plus 1 will be 2. 2 plus 2 will be 4. Minus 3 plus 4 will be equal to 1. This is A minus. A plus B. And this is B plus A. B plus A equal to the same. B plus A is the same as A. 0, 1, 0 and 2, 4, 1. Now find A minus B. 1 plus 1 will be 2. Minus 2 minus 2 minus 4. 5 plus 5 will be equal to 10. Minus 1 is minus 2. 4 plus 3 will be 7. 3 plus 3 will be equal to 6. 1 minus 1 will be equal to 0. 2 minus 2 is 0. Minus 3 minus 4 will be minus 7. This is A minus. And B minus A equal to minus 1 will be minus 2. And 2 plus 2 will be 4. Minus 5 will be minus 10. 1 plus 1 will be 2. Minus 3 minus 4 will be minus 7. Minus 3 will be minus 6. And 1 minus 1 will be equal to 0. 2 minus 2 will be 0. 4 plus 3 will be equal to 7. What is to minus sign to be common negative? Minus sign to be common negative. It has to 2 minus 4 10 minus 2 7 6 0 0 minus 7. And this is nothing but the value of A minus. अगला proof. अगला conclusion कौन मिला देखो. यदि दूसरा matrix given अच्छी. If two matrices are given, then they are commutative. A plus B equal to B plus A. এটা আমি proof করলে. And যদি A minus B is अच्छी, that is equal to minus of B minus A. তো এটা মানব. যদি কোটি আসলে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব. A plus B is B plus A and A minus B equal to minus of B minus A. And this is important. এই কোশ্চেন আমরা এটা শিখব. ঠিক আছে. Find a 2 by 2 matrix X if X plus let एमटी क्वेश्चन में कौन करिए X को कंसीडर कर दो. Let X is equal to A, B, C and D. 2 by 2 matrix का दूसरी रो और दूसरी कॉलम. Since X plus 0 1 1 0 equal to 2 0 0 2, therefore X is equal to
एटा से एपटू पळेबो को एलिमेंट टा दिस इज 2002 minus 0110 minus कर दो 2 minus 0 will be 2 0 minus 1 is minus 1 0 minus 1 is minus 1 2 minus 0 will be equal to 2 therefore x को हमें कौन निकले x को हमें निकले a b c and d and this is equal to 2 minus 1 minus 1 and this is equal to x এটা তোমার आंसर बुझिएगा now determine x y z कौन फाइंड करेगा देखो हमको फाइंड करना है एक्स वाई और जेड रो वैल्यू इफ एक्स वाई जेड देखो कौन कंडीशन दिया है एक्स वाई जेड माइनस ऑफ -4 3 1 इक्वल टू -5 1 0 तो कि एक्स वाई जेड इन द लेफ्ट हैंड एक्स वाई जेड तक लेफ्ट साइड रख दो ये जो मैट्रिक्स था उन्हीं के राइट साइड पर प्लस कर दो -5 1 0 नाउ प्लस -4 3 1 मैट्रिक्स का शेप निकाल अब ये दोनों को ऐड कर दिया -5 -4 will be equal to -9 1 plus 3 will be 4 and 0 plus 1 will be equal to 1 therefore x is equal to corresponding element equal होगा this is x y z यदि दोटा मैट्रिक्स हमसे इक्वल रहबो माने यार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो वैल्यू इक्वल तो x is equal to होगला -9 y is equal to होगला 4 and z is equal to 1 बुझला डन ଏବେ ଦେଖ जल्दी जल्दी करिया काहे मैट्रिक्स हला पर हमको जल्दी जल्दी डिटरमिनेंट करिकी कैलकुलस रे पहुंच जाए कैलकुलस माने डिफरेंशिएशन लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन सेगुडा कोन काहे सेगुडा को इंपोर्टेंट आ सेगुडा को सॉल्व करबा पर आपको बेसी समय दरकार प्रैक्टिस करबा पर मतलब बेसी समय दरकार नहीं आ सेगुडा को जेई रो मते बहुत क्वेश्चन आसे सेगुडा तो इजी हम जल्दी जल्दी कर दी पड़ेगा जल्दी जल्दी कर दिया और सेठी हमें ठीक है अधिक टाइम स्पेंड करबा व्हाइल सॉल्विंग कैलकुलस ओके चल एटी कर दीजिए इफ x1 x2 y1 y2 minus this equal to this तो देखो x1 x2 y1 y2 equal to राइट साइड कौन मैट्रिक्स अछि 3 5 1 2 एटा राइट 8 माइनस तो से पर प्लस है 2 3 0 1 प्लस कर दो 3 plus 2 is 5 5 plus 3 will be 8 1 plus 0 will be 1 and 2 plus 1 will be equal to 3 and this is the value of x1 x2 y1 y2 now corresponding element equal है तो x1 is equal to 5 and x2 is equal to 8 y1 is equal to 1 and y2 equal to 3 and these are the answers now find the matrix which when added to this कौन कर बुझलो गोटे मैट्रिक्स हमसे फाइंड करो जे या को ऐड हला पर आंसर एटा आसे लेट x be the matrix let x be the matrix therefore x plus the matrix 2 minus 3 minus 4 7 equal to 4 1 3 2 therefore x is equal to separate जाए minus 4 1 3 2 this minus 2 minus 3 minus 4 7 now subtract 4 minus 2 will be 2 1 plus 3 will be equal to 4 3 plus 4 will be equal to 7 2 minus 7 will be equal to minus 5 this is the matrix X next calculate whenever possible the following products देखो एट प्रोडक्ट पॉसिबल अच्छी कि नहीं देखो यार ऑर्डर हेगला 2 क्रॉस 2 और यार ऑर्डर हेगला 2 क्रॉस 1 प्रोडक्ट पॉसिबल है अपन जब देखो एटी हम गुड इंफॉर्मेशन लिखतो इंफॉर्मेशन कोन देखो इफ A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order n cross p माने number of column of first must be equal to number of rows of second फर्स्ट मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ रो एटा इक्वल हेले कि मल्टीप्लाई हे पड़े तो एटी इक्वल अछि देखबे हम और जो नुवा मैट्रिक्स आसी सी तार ऑर्डर हेगो m क्रॉस p तो एटी अछि ना देखो एटी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ठीक है तो मल्टीप्लाई हे पड़े केमति मल्टीप्लाई करबे देखो 1 2 3 4 दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 2
एमती हम मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 1 into 2 एमती हो 1 into 2 plus 2 into 3 1 into 2 plus 2 into 3 then second row multiply कर ले तले लिखिए 3 into 2 plus 4 into 3 मान देखो 1 into 2 plus 2 into 3 है तब 3 into 2 plus 4 into 3 एमती so 1 into 2 will be equal to 2 plus 2 into 3 will be equal to 6 3 into 2 will be 6 4 into 3 will be equal to 12 so 2 plus 6 is equal to 8 6 plus 12 will be equal to 18 8 and 8 अब देखो यार ऑर्डर 2 क्रॉस 1 2 3 वो गोटे करो ठीक है 8 चेक करो जो फर्स्ट मैट्रिक्स अछि तार ऑर्डर होची जो ए वाला मैट्रिक्स अछि 2 रो एंड 1 कॉलम and B वाला मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम since number of column and number of row are not equal A रो मैट्रिक्स ऑर्डर होची 2 क्रॉस 1 और जो B मैट्रिक्स अछि 2 क्रॉस 2 since number of columns of A is not equal to number of rows of B therefore A cross B is not possible clear kind of first matrix रा number of column और second matrix रा number of row जदि equal हबो then only matrix multiplication is possible एटा होके information बा this is the information box यदि ये condition को satisfy करो then only you can multiply otherwise you cannot multiply ये आगे 8 देखो this is of order 2 cross 2 this is of order 2 cross 2 तो अगर order 2 cross 2 है तो multiply ही करेंगे देखो first matrix of order 2 cross 2 second is also of 2 cross 2 so 2 to equal है ना तो जो नया मैट्रिक्स है वो that is also of order 2 cross 2 तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो this into this first row into first column so first into first 1 into 3 plus 2 into 1 ठीक है what element then first into second करेंगे 1 into 1 plus 2 into 1 then second row into first column so 2 into 3 plus 1 into 1 second row second column 2 into 1 plus 1 into 1 so 1 into 3 will be equal to 3 plus 2 into 1 will be equal to 2 1 into 1 is 1 2 into 1 is 2 2 into 3 will be 6 1 into 1 is 1 2 into 1 will be 2 1 into 1 is 1 so 3 plus 2 will be equal to 5 1 plus 2 will be equal to 3 6 plus 1 will be 7 2 plus 1 will be 3 so this is the matrix of order 2 cross 2 here also the matrix first matrix A is of order 2 cross 2 and second matrix B is of order 2 cross 3 so column and row are equal therefore multiplication is possible multiply करिए तो देखो A into B equal first row और first column into multiply करिए 1 into 1 plus minus 2 into 2 then first row second column first row से तो कौन करिए second column so 1 into 2 plus minus 2 into 3 then first row into third column 1 into 3 plus minus 2 into 4 then second row first column minus 2 into 1 plus 3 into 2 second row second column minus 2 into 2 plus 3 into 3 second row third column minus 2 into 3 plus 3 into 4 1 into 1 will be equal to 1 minus 4 so this will be 2 minus 6 this will be 3 minus 8 this is minus 2 plus 6 here it is minus 4 plus 9 and this is minus 6 plus 12 1 minus 4 will be minus 3 2 minus 6 will be equal to minus 4 3 minus 8 will be equal to minus 5 minus 2 plus 6 will be equal to 4 9 minus 4 will be equal to 5 12 minus 6 will be equal to 6 तो जो कैसे मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम देन सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम कैलकुलेशन में ठीक है ध्यान दे ठीक है तो एटा है गला हमरा क्वेश्चन नंबर 1 to 7
आउ एटा जो या पूर्वर जदी वीडियो गुडा देखि नथि या पूर्वर माने को वीडियो थिला हमर थियरी वीडियो दुटा थी गोटे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन ए सब थिला आ गोटे ऑपरेशंस थी ट्रांसपोजर प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस से सब थिला से गुडा देखि नथि आगो से दुटा देखबे वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देन कम टू वीडियो 3 सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आ या पर यार जे वीडियो आस तो चैप्टर सरला पर यार कोन हो जे वीडियोस आसे सेटा को देखो एंड नियर फ्यूचर रे हमें हमर ऐप तक इंस्टॉल करबा तो ऐप रो लिंक का हमें डाउनलोड कर ऐप रो लिंक तक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी सेटा हम डाउनलोड कर पर सेटा को बहुत जिंस मिले 2019 20 21 22 हम एमसीक्यू सीरीज बनेथि एमसीक्यू सीरीज में आपन ओडिशा जे रो वीडियो मिले आपन ईच चैप्टर चार चार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो मिले हमति बहुत बड़ा अराउंड 100 वीडियोस अछि हमर सेठी मिले सब ठीक है अब या पूर्व जो चैप्टर उडा देखियो जेंते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेला सेट रिलेशंस इन फंक्शन हेला से चैप्टर वीडियो अलोंग विथ तार जे वीडियोस में हम अपलोड कर सकते हां सो गो एंड वॉच सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट बुझिए आउ यदि चैनल रो नुवा छै चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू विल रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस मिसेगा नेक्स्ट लेक्चर यार क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स में सॉल्व करिए until then